Good morning, team. There are provisional numbers from Angel One. So, Angel number provisional numbers are pointing out a few interesting points. They have added clients in this quarter, which is higher by 49.5%. So they have 1 crore 37 lakh 80,000 client, which is very huge, and they control almost 21% of the total volume. And in cash volumes, they control only 13%. For the month of March, it is only 11%. But overall volume, they are doing a good job because they have commodity. In commodity, they control almost 55% volume. But one more interesting aspect which I noticed it is the funding book has dropped for them. So that is something which is very interesting. The drop is almost when we see the monthly basis, the drop is compared to last year, it is 20% drop. So month on month also there is a 3.8% drop. So clients are not interested to carry the portion in leverage or in F&O is what I can understand by this data. So very interesting data. LODA also came with numbers. Before that, India and European Union were speeding up work on free trade agreement, which is very positive for the country. We need to increase our export. LODA came with their numbers. They said, as per the numbers, it is one of the best performance they have given ever. So it is higher by 34% year-on-year basis at 12,064 crores. And their guidance was 11,400 crores. So they are higher than their guidance. And for Q4 FY23, their pre-sales stood at 3,025 crores. And their collection also were higher by 23% at 10,606 crores. Very good numbers from LODA. And they are saying, Mumbai, Pune and Bengaluru markets, they have GDP of 19,800, which is a saleable thing. So they are saying they will do very good. Their net debt also has reduced. It is at 7,071 crores. So they are gung-ho about their business. So I think real estate as a sector, in spite of rising interest rate, is still doing very good. KAC has said they have won a new order of 1,213 crores, and company has informed the exchange that it in FY23 it is a highest order intake of 22,378 crores. KAC has been outperforming. DMart came with provisional numbers, so there I think it is disappointment. The growth is 20%. So their revenue in Q4 FY23 is 10,337 crores. But quarter-on-quarter basis, the growth is negative. So, but 20% growth is not small. But for the valuation DMart trades, they have to grow at 25 to 30%, and their volumes in other business than Kirana should be higher. Mainly in textiles, they have to clock better volumes. There, I think they have not done very good. But it is okay. If the stock corrects 8 to 10%, it will be a good opportunity to buy. FY23 full numbers, which I have calculated personally, it comes to 42,582 crores, which is a provisional number. It can change when the audited number comes, which is higher by 37%. And their store count has grown to 324. The growth is not very big. They have to add more stores. Ahluwalia Contracts secured an order for construction of Dharavi wastewater treatment facility and under Mumbai sewage disposal project at Mumbai. 556 crores. It is from Wellspun Enterprises that they have got. Mahindra Lifespace Origin. They have a project called Origin Chennai. It has signed a lease agreement with Mitsubishi Electric India Limited, spread over 52 acres. Origins by Mahindra, which is there in North Chennai. It has almost 307 acres.
So let us see how it pans out. Nazara subsidy has acquired 51% stake in Singapore-based full-service live media company branded. And today we have RBI monetary policy. So we need to see how the policy goes. So market will be slightly volatile before it can stabilize. So one has to be very, traders should be very careful. RBI has bought 3 tons of gold in the month of February 2023, taking the total to 790.2 tons of gold reserves. That is what World Gold Council has said. India holds 8% of gold reserves. That is one more data. Ujjivan Small Finance Bank, their deposit has grown at 39% at 25,481 crores. And quarter-on-quarter basis also it was higher by 10%. CASA is about 26.4%. Loan book is 24,114 crores, which is higher by 33%. So Ujjivan is growing above double the size of other things. So this is something to watch out for. Bajaj Alliance, they have given a data in the exchange. Gross direct premium collected in March 23 is 1,118 crores. Year till date, it is 15,336 crores. RVNL has emerged as L1 bidder for EI-based automatic signaling with continuous track circuiting in Gwalior-Jhansi circuit, which is 121 crores. Equitas Small Finance Bank, they also came with the provisional numbers. So 36% higher in advance at 28,061 crores. And deposit also has grown 34% at 25,381 crores. So the smaller banks are growing faster. Whereas, your KTK Bank, it is a disappointment. Their deposit has grown only 8%. And their advance has grown even lower at 6%. So their advance is 61,326 crores. Not a great growth. So I think one has to be careful with KTK Bank, even with Bank of Maharashtra. Their advance has grown at 29.59%. Very good advance growth. 1,75,255 crores. So deposit also grew by 15.72%. So deposit is at 2,34,000 crores. So these are very interesting numbers for Bank of Maharashtra, Ujjivan, Equitas Small Finance. In the last news, BLS International has signed a MOU to accept electronic visa on arrival, seamless travel to Thailand. So it is with the Thailand government. So they will be processing 75,000 plus application in the expected upcoming seasons from 17 countries. There are many countries. It includes even India and China. So anybody traveling to Thailand from these 17 countries can have an electronic visa. So you don't need to wait in the queue for 1-2 hours to get everything processed. Everything will be processed instantaneously. So this will reduce the crowd and it will increase the time you spend in Thailand. So with that, over to you, team. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग एक कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. जो प्रोविजनल नंबर्स आए थे बहुत सारे कंपनी के, उसमें से एंजल वन के नंबर्स आए थे. उसमें उन्होंने क्लाइंट जो एडिशन किया है वो अराउंड 49.5% से किया है ये क्वार्टर में. 1 करोड़ के ऊपर उनके क्लाइंट से, और उनका जो ओवरऑल वॉल्यूम है वो कमोडिटी से ज्यादा आता है. 55% वॉल्यूम आता है. और उनका जो फंड बुक है वो ड्रॉप हुआ है. हम लोग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो 3.8% से ड्रॉप हुआ है. 20% से ईयर ऑन ईयर लास्ट सेम मंथ का हम लोग सेम मंथ का लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वो 20% है. तो ओवरऑल जो नंबर्स थे प्रोविजनल नंबर्स काफी अच्छा है एंजल वन के. देन नेक्स्ट अपडेट है लोढ़ा के ऊपर. लोढ़ा के भी जो प्रोविजनल नंबर्स आए तो उसमें जो ग्रोथ देखी गई है वो 34% है ईयर ऑन ईयर. 12,064 करोड़ के. कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था उससे भी हायर उनके नंबर्स शो कर रहे हैं. उनका कलेक्शन भी 23% से अच्छा आया है. 10,600
66 करोड़ के अराउंड। और जो पुणे, मुंबई, बेंगलोर का जो जीडीपी वो ग्रो हो रहा है, तो कंपनी बोल रही है कि ये मार्केट में वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और उनका जो नेट डेब्ट है वो रिड्यूस हुआ है। देन केईसी इंटरनेशनल जो कंपनी है उनको ऑर्डर मिला है 1213 करोड़ का, हाईएस्ट एवर ऑर्डर है इनटेक अभी तक का। ऐसे उन्होंने एक्सचेंज पे अपडेट किया है। तो ओवरऑल ये ईयर में उनको 22,378 करोड़ का ऑर्डर बुक है और उनकी जो ग्रोथ है वो 30% है। देन नेक्स्ट अपडेट है कि डीमार्ट के प्रोविजनल नंबर्स आए थे, तो उसमें भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो रिपोर्ट की है 20% ईयर ऑन ईयर, और जो उनका स्टैंडर्ड रेवेन्यू ऑपरेशन है वो 10,337 करोड़ है। और इसके अलावा हम लोग देखें तो वैल्यूएशन वाइज उनका जो ग्रो है वो कंपनी ग्रो होनी चाहिए 25 to 30% के हिसाब से, और उनके जो अदर सेगमेंट है बिजनेस के उसमें भी थोड़े परफॉर्मेंस है वो बेटर होना चाहिए। बट ओवरऑल हम लोग स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव है, बट लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से जब भी करेक्शन मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। देन अहूवालिया जो कॉन्ट्रैक्ट है उनको ऑर्डर मिला है, कंपनी ने ऑर्डर साइन किया है धारावी का जो है सीवेज पाइप के उसके रिलेटेड, और ये ऑर्डर उनको वेल्सपन जो एंटरप्राइजेस है वहां से मिला है। देन नेक्स्ट अपडेट है जो महिंद्रा लाइफ स्पेस जो कंपनी है वहां से उसके ऊपर अपडेट है। जो महिंद्रा लाइफ स्पेस कंपनी है वो बेसिकली अग्रीमेंट साइन और लीज अग्रीमेंट साइन कर रही है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के साथ। ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक कंपनी है वो सेटअप करेंगी 52 एकड़ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट महिंद्रा इन चेन्नई में, और इसका जो ओरिजिन है इंडस्ट्रियल क्लस्टर वो तमिलनाडु स्टेट में होगा। आज आरबीआई की पॉलिसी है, तो पॉलिसी कैसे उसका क्या आउटपुट आता है वो देखने जैसा होगा। और वो मार्केट स्टेबलाइज होने से पहले थोड़ा आफ्टर मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगी, तो ट्रेडर को केयरफुल रहना चाहिए। देन नेक्स्ट अपडेट है नजारा टेक्नोलॉजी के ऊपर। कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है गेमिंग की सिंगापुर बेस्ड सब्सिडरी कंपनी है, उन्होंने अक्वायर किया है 51% स्टेक लाइफ मीडिया कंपनी ब्रांडेड, और ये एक्विजिशन है नोडाविन गेमिंग अक्वायर ऑल एग्जिस्टिंग इवेंट। देन नेक्स्ट अपडेट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के भी प्रोविजनल नंबर्स आए थे। कंपनी काफी अच्छे से ग्रो हो रही है, कासा जो है वो इम्प्रूव हुआ है 26.4% से ग्रो हुआ है। उनका लोन बुक है वो भी अराउंड कुछ 33% के है। देन ओवरऑल ये स्टॉक वॉच आउट करने जैसा होगा। देन नेक्स्ट अपडेट है आरबीएनएल के ऊपर। कंपनी को कुछ बिडर मिला है झांसी सर्किट से। देन इक्विटा स्मॉल फाइनेंस के भी नंबर्स आए थे, 36% ग्रोथ देखी गई एडवांसेस में 28,061 करोड़, और डिपॉजिट्स के में भी ग्रोथ देखी गई 34% से 25,381 करोड़ से। कंपनी काफी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। देन केटीके बैंक के भी नंबर्स आए थे, बट ये प्रोविजनल नंबर्स केटीके बैंक के इतने अच्छे नहीं आए थे। एडवांसेस हार्डली 6% से ग्रो हुआ है, 61,326 करोड़ कंपनी ने रिपोर्ट किया है। डिपॉजिट 8% से ग्रो हुआ है, तो ये थोड़ा स्टॉक से केयरफुल रहना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी नंबर्स आए थे, नंबर्स काफी अच्छे आए थे। देन सिटी यूनियन बैंक है, उसमें भी एडवांसेस ग्रो देखा गया है 6.7% ईयर ऑन ईयर, और अभी वो 43,948 करोड़ है। डिपॉजिट ग्रो हुआ है 9% ईयर ऑन ईयर। कासा रेशियो में डिक्लाइन देखी गई है 32.6% की। कासा डिपॉजिट है अप है 7.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। करंटली लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से हम लोग पॉजिटिव है। चोला फाइनेंस के भी नंबर्स आए थे। डिसबर्समेंट है क्वार्टर 4 का वो 21,020 करोड़ का है, ग्रोथ 65% की है। ओवरऑल डिसबर्समेंट व्हीकल फाइनेंस का जो बिजनेस है वो ग्रो हुआ है 39% क्वार्टर 4 में, 56% लास्ट ईयर फाइनेंशियल 23 में था। और होम लोन जो है डिसबर्समेंट उसकी जो ग्रो हुई है 156% से। ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी भी ओवरऑल लेवल सभी स्टूड करते हैं 130% से क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 23 में। लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से बाय रेटिंग है, और जो टारगेट प्राइस है वो 930 की है। देन नेक्स्ट अपडेट डिफेंस के ऊपर। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो अभी 15,920 करोड़ 2022 और 2023 में रीच हुआ है, तो हाईएस्ट एवर और नोटेबल टेनफोल्ड इंक्रीज हुआ है सिंस मतलब 2016 और 27 में ये जो नंबर्स थे वो काफी कम थे, बट अभी इसमें हाईएस्ट एवर ग्रोथ देख रही है। और रफली हम लोग देखें तो 23% की राइज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इंडिया अभी एक्सपोर्ट कर रहा है ओवर 85 कंट्रीज को, और कमिंग ईयर्स में और एक्सपोनेंशियल राइज डिफेंस एक्सपोर्ट में देखा जा सकता है। और टारगेट है डिफेंस एक्सपोर्ट का वो 35,000 करोड़ का है,
और ये अचीव करने का एम रहेगा 2025 तक का। तो ये पॉजिटिव होता है डिफेंस रिलेटेड सेक्टर के लिए। तो उसमें हम लोग ये जो स्टॉक्स है HL है, भारत डायनामिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BL, ये स्टॉक को ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देन नेक्स्ट अपडेट है टाटा स्टील के ऊपर। कंपनी का बिजनेस अपडेट आया था तो Q4 फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी ने रिपोर्ट किया 5% राइज क्रूड स्टील प्रोडक्शन में 55.15 मिलियन टन, और जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो मार्जिनली 5.15 मिलियन टन ये क्वार्टर में हुआ है। और उनका जो नीलचल इस्पात निगम है उसको एनुअल कैपेसिटी है 1 मिलियन टन की क्रूड स्टील और पिग आयरन में। और जो टाटा स्टील का यूरोप का जो प्रोडक्शन देखे तो फ्लैट है अराउंड 2.31 मिलियन टन, और उनका जो डिलीवरी डिप है वो 11% है जो 2.13 मिलियन टन है। करंटली स्टॉक के ऊपर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से होल्ड रेटिंग है। इन्फोसिस कंपनी है, उन्होंने एक्सटेंड किया उनका कोलैबोरेशन डेटा एनालिटिक्स जो कंपनी है लेक्सिस नेक्सिस, जो बेसिकली प्रोवाइड करती है एंड टू एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ओवरऑल रेंज कंटेंट एंटरप्राइज और प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए। देन दलमिया भारत शुगर जो इंडस्ट्री है उनके जो बोर्ड है उन्होंने कैपेक्स जो है 400 करोड़ का, जो बेसिकली ये सेटअप करेंगे ग्रीन बेस्ड डिस्टिलरी कंपनी का जो निगोही यूनिट है, और ये जो डेली कैपेसिटी है वो 250 किलो लीटर्स होगी। कंपनी ने अप्रूव किया है कैपेसिटी एक्सपांशन रामगढ़ शुगर यूनिट, जो पहले 6,600 टन केन पर डे था, अभी वो आगे जाके कैपेक्स एक्सपांशन के बाद 7,000 टन केन पर डे होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो इसके लिए लगेगा वो 14 करोड़ का है। देन लार्सन एंड टुब्रो जो कंपनी है जो अंबल फर्टिलाइजर्स केमिकल से अवार्ड मतलब उनको बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मिला है 960.71 करोड़ का लार्सन एंड टुब्रो को, जो बिल्डिंग करेंगे टेक्निकल अमोनिया नाइट्रेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और उसकी जो एनुअल कैपेसिटी रहेगी 2.4 लाख मेट्रिक टन। Technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that Nifty rallied till 17,570 and it has crossed 17,500 level, and the close is also at 17,557. So this is a great move. So with this, the Nifty is now close above the 50 simple moving average, which is a sign of positive. And now after 17,500, I believe the next hurdle will be the previous month high, which was at 17,799, net to 17,800. So once we see so that can be a small intra week kind of hurdle. So whenever this 71,000, the 17,800 is taken out, the next level to watch is 18,000 and then 18,200. So gradually, I believe the Nifty should be heading higher. On the lower side, the immediate support is at 17,200 and directionally 16,800. But then whenever just in case if there is some slight profit booking and the Nifty corrects close to 17,400, 17,300, so that should be viewed as a buying opportunity. Immediate upside is 17,800 and then 18,000 and 18,200. So this would be the upside levels for the Nifty. Coming to Bank Nifty is also positive. Bank Nifty has yesterday we saw a high at 41,071 and the close is almost at 41,000. So today being a expiry, I believe there is a slight hurdle at 41,500, and if you see the last month high for the Bank Nifty, that is 41,671. So this 41,500, 41,600 might act as a timing resistance, but the view is quite strong positive, and I believe that this 41,500, 41,600 will be taken out soon. Lower side, the support is at 40,180. So net 40,000 is the support for the Bank Nifty. So this would be the range for the Bank Nifty. Bias is positive. We are looking for this 41,500 to be taken out in the next coming trading session. Coming to derivatives data. So in derivatives, there was a short covering in Nifty futures to the tune of 2.04%, which was decrease in OI by 0.25 million shares. The put call ratio has gained from 1.15 to 1.39, which is positive. The major put additions were seen in 17,500 and 17,400 put options. So that will act as a support. On the higher side, 17,700 call option. So that will act as a resistance. In Bank Nifty, we saw a short covering to the tune of minus 22.97%, which was in decline in OI by 0.82 million shares. Actually, the PCR in Bank Nifty has reduced from 1.29 to 1.17. Still, it is trading above 1 ratio. So as long as it is trading above 1, it is positive.
The major additions were seen in 41,000 put option. So that will be the support, and the higher side 41,500 call option. So that will be the resistance. So in both the in technicals, we are initiated a call. It's a 3 to 4 weeks of call. We are liking LNT. LNT, after a long period of time, it has given a very good trend line breakout, and that is very strongly supported by the volumes. So we believe that in next couple of weeks, there can be a good upside in the LNT. We recommend a buy in the range of 2245 to 2225. The stop loss would be 2145 and the target price is 2460. So any decline in LNT should be viewed as a buying, is what we believe. Lastly, the FII data. FIIs on the index futures had added the long position close to 31,346 contracts, and this net short is now close to 1 lakh contracts. Even there is a improvement in the long short ratio from till 17, which is quite strong. And lastly, if I look at the derivatives data, out of 194 stocks, there are 114 stocks which have seen a long build-up, which is close to 41%. So I believe there are slowly long positions have been created in the system. So bias is positive. Today expiry also looks on the higher side. So we should be trading a call of should be trading a long idea. That's the view. Thank you. I'll hand over to Archana madam for more research updates. Thank you. Thank you, Brijesh. Good morning, team. So, few updates from my side, starting with LNT. So, the Chambal Fertilizers and Chemicals have awarded a contract worth ₹960 crore to LNT for building a technical ammonium nitrate manufacturing plant with an annual capacity of 2.4 lakh metric tons. On Dalmia Bharat Sugar and Industries, the board has approved capex of 400 crores for setting up grain-based distillery at the company's Digoi unit with a daily capacity of 250 kiloliters. It has also approved the capacity expansion at Ramgarh Sugar Unit from 6,600 metric tons per day to 7,000 tons per day at a capital expenditure of 14 crores. On Infosys, the company has extended its collaboration with data and analytics company LexisNexis to provide end-to-end information services across the range of content, enterprise, and product applications. On Tata Steel, the company has given the business update for Q4 FY23. The company has recorded 5% rise in the crude steel production at 5.15 million tons, but the delivery volumes has ticked up marginally to 5.15 million tons during the quarter. Neelachal Ispat Nigam has annual capacity of 1 million tons of crude steel and pig iron, while the Tata Steel Europe saw production flat at 2.31 million tons, while the deliveries dipped by 11% to 2.13 million tons. We have hold rating on the stock with a target price of 106. On Avenue Supermarts, the company has given the business update for Q4 for this financial year. The company has reported 20% YoY rise in standalone revenue from operations at 10,337 crores, while the number of stores as of March 31st, 2023 stood at 324. So there is a news on defense. So India's defense export has reached 15,920 crore in 2022-23, which is the highest ever and is a notable tenfold increase since 2016-17. And it is roughly around 23% rise on YoY basis. The country is now exporting to over 85 countries. In the coming years, we look to see an exponential rise in the defense exports. The target for defense export has set to close to 35,000 crore, which is aimed to be achieved by 2025. This holds positive for defense sector, and the stocks which will benefit out of this are HAL, BDL, and Bharat Electronics. On Chola Finance, the company has given Q4 updates. Disbursement for Q4 FY23 stood at 21,020 crore, witnessing a growth of 65%, and for FY23 stood at 66,532 crore, which is a growth of 87%. Disbursement in vehicle finance business grew by 39% in Q4 and 56% for full year. While in home loans, it grew by almost 156% in Q4 and 102% in FY23. Overall collection efficiency on billing at an overall level stood at 130% in Q4. We have buy rating on the stock with a target price of 930. And lastly, on City Union Bank, the advances grew by 6.7% YoY in Q4 and stood at around
43,948 crore, while deposits grew by 9.9% YOY in Q4 and stood at 52,399 crores. CASA ratio has declined from 32.6% in Q4 FY22 to 29.9% in Q4 FY23. We have buy rating on the stock with a target price of 190.